Hello everyone, Vinita this side. Welcome back to my channel. So I hope you all are fit and fine. So today we are going to start class ninth English, the new poem, The Rain on the Roof, and a poem whose poet is whose poet was God's Kinney. So Rain on the Roof. From the title of the poem, Rain on the Roof, we can make out that the poem is about the rain. As the name suggests, the poem is completely revolves around the topic of rain only. So the poet is telling us about the memories he has for the rain. In this, the poet wants to express his memories that was connected by the rain. The sound of the raindrops falling on the roof of his house that brings back sweet memories of the past. So, the poem Rain on the Roof talks about the poet's varied reaction to the sound of raindrops falling on the roof of his house. उसके घर पे जो पानी की बारिश की जो बूंदें गिर रही हैं, तो उनकी जो साउंड क्रिएट हो रही है ना, उस साउंड का जो पोएट है, उस पे डिफरेंट डिफरेंट जो है वो रिएक्शन दे रहा है. हर एक साउंड पे एक डिफरेंट रिएक्शन वो हमें प्रोवाइड कर रहा है. So he says that वो कहता है the raindrops at night are like tears shed by the sad and dark night. कि रात को जो बारिश होती है ना that was tears वो आंसू होते हैं. अब वो आंसू किसके होते हैं? वो आंसू होते हैं उदासी भरी और रात जो बिल्कुल अंधेरी रातें होती है ना वो अपनी उदासी जो है वो जाहिर कर रही होती है. रात जो है जब वो बिल्कुल डार्क हो जाती है ना तो वो अपनी उदासी को एक्सप्रेस कर रही होती है. सो बाय द टीयर्स शेड बाय द रेन. I hope you will understand. So he loves to lie in bed and hear the rain falling on the roof of his room because it gets back sweet memories of the past. So he says that the sound of raindrops helps him fall asleep and gives him sweet dreams. So he has memories of his loving mother also who would put them to sleep. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड लाइक इन रेन ऑन द रूफ कविता जो है वो अपने घर की छत पर गिरने वाली जो बारिश की बूंदे हैं ना उसकी आवाज पर कवि की जो विविध तरह की वैरिड तरह की जो रिएक्शंस हैं उसकी प्रतिक्रियाएं हैं उसके बारे में बात करती है. वो कहता है कि रात में जो बारिश की बूंदे हैं वो उदास अंधेरी रात में बहाए गए आंसुओं की तरह होती है. अब इस मौसम में ऐसे जब बारिश आ रही है तो जो पोएट है वो कहता है कि उसे बिस्तर पर लेटना, कमरे की छत पर बारिश की बूंदों को गिरते हुए सुनना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इससे मेरी पास्ट की कुछ मीठी मेमोरीज जो हैं, स्वीट मेमोरीज जो हैं वो मुझे वापस जो है वो याद आती रहती हैं. वो कहता है कि बारिश की बूंदों की आवाज उसे कभी भी सोने में मदद करती, उसे सोने में भी हेल्प करती है क्योंकि वो उसको ड्रीम्स देती है. तो जब ड्रीम्स तो हमें तभी आते हैं ना देन जब हम बहुत अच्छी सी नींद में होते हैं. तो उसके पास अपनी प्यारी माँ की यादें भी हैं जो उसे बचपन में रात को सुलाती थी. तो इसीलिए जब वो बारिश आती है तो उसको क्या महसूस होता है कि उसकी मम्मा जो है वो उसको सुला रही है. आई होप यू विल अंडरस्टैंड टिल हियर. सो द कंप्लीट फॉर्म is just related with the revolves around the rain. Next we do have about the poet and the name of the poet God's Kinney. So if we just want to know something about God's Kinney, so God's Kinney जो है हमारे पास हमारा जो poet है, he was completely, we can say that, perform so many roles in his life. Actually, he was a lawyer, politician,
जर्नलिस्ट एंड पोएट एज वेल. पोइट भी है, जर्नलिस्ट भी है. So we can say that Court Skinney was born on 24th November 1826, New Pen Yan, New York. In New York, if ever the description the man had a full life could be leveled at someone, then that man would have to be Court Skinney. During the 19th century, he was at various times a wistful and skillful poet. He had two collections published, Keuka and other poems in 1855 and the lyrics of the idol and the real in 1888. One of his most famous poems written in 1849, the rhythmic and haunting. And if we just talk about Rain on the Roof, so set to music was the most popular poem. It could be said that this poem established the name of Court Skinney as a popular poet. Means to say, this poem is the one of the best poem written by the poet Court Skinney. And after this poem, he was established as a popular poet. So Court Skinney to a stranger's eye was every inch the military man, yet he was described as tenderly affectionate. The inner man, revealed by his writing, was thoroughly democratic and humanitarian. So Korsky died in Cincinnati on 25th January 1904 at the age of 77. Okay, I hope you will understand something about it. So mainly the point was that he was American lawyer, journalist, politician also and poet as well. And Rain of the Roof was the most popular poem which was set to music. I hope you will understand something about the poet. Now, nextly, now we do have what is the meaning of the poem Rain on the Roof. As we already discussed in the introduction part also, that what do the poet want to express by this poem. The poem Rain on the Roof talks about the poet's varied reaction to the sound of raindrops falling on the roof of his house. As the name suggests, the poem Rain on the Roof was completely revolves around the rain. And in this poem, the poet talks about his varied reaction to the different sound of rainfalls, different sounds of raindrops falling on the roof of the house. He says that the sound of the raindrops helps him fall asleep and gives him sweet memories. वो कहते हैं कि जो बारिश की बूंदें हैं ना वो मुझे सोने में बहुत हेल्प करती हैं क्योंकि मुझे वो बोलते हैं ना ब्लिस एक सुख महसूस होता है कि लाइक मेरी मदर मेरे पास है जो मेरी हेल्प कर रही है मुझे सुलाने में क्योंकि रेन ड्रॉप्स की बूंदों की जो पीसफुल टिंकल्स होते हैं ना वो मुझे स्वीट मेमोरीज स्वीट ड्रीम्स की तरफ लेके जाते हैं और स्वीट ड्रीम्स की तरफ हम तब जाते हैं व्हेन वी आर स्लीपिंग व्हेन वी फॉल asleep. So he says that whenever he hears rain falling on the rooftop, the sound repeats in his heart and his dreams, so he has many different fanciful imagination. सबसे पहला पॉइंट उसने बोला है कि जब वो बारिश की बूंदों को सुनता है ना तो साउंड्स जो है ना वो उसके दिल में बार बार रिपीट होती हैं उसके सपनों में बार बार रिपीट होती हैं तो जिससे क्या होता है वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जो इमेजिनेशन है ना बहुत कल्पनाएं जो वो करता है बिकॉज एज वी नो ही वॉज एटलीस्ट अ पोइट तो पोइट को तो कहीं ना कहीं से इमेजिनेशन चाहिए ही होती है तो दैट वॉज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ हिज इमेजिनेशन कि उसको वहां से
बहुत फैंसीफुल, बहुत कल्पनात्मक और बहुत इमेजिनेटिव उसको चीजें जो है वो समझ में आती हैं. Now he adds that the sound of the raindrops, rain falling on the rooftop creates many new different dreams in his mind. अभी तक तो उसने कहा कि वो दिल में रिपीट होती है, उसके ड्रीम्स में रिपीट होती है, जिससे उसकी इमेजिनेशन पावर जो है वो इंक्रीज हो जाती है. बट नाउ ही एड्स दैट by the rain falling's drop, it was very helpful to create many different dreams in his mind. उसके सपने जो है उसके दिमाग में बुनना शुरू हो जाते हैं. Then nextly, he recollects many memories of the past which come back into his mind as dreams. अब वो क्या करता है, जब बारिश की बूंदों को आराम से बैठ के सोच रहा होता है, सुन रहा होता है, उनको अपने दिल से महसूस कर रहा होता है, सो एट दैट टाइम वो बहुत सारी मेमोरीज जो है वो कलेक्ट करता है, जो उसके ड्रीम्स और उसके माइंड में हमेशा चलती रहती है. तो वो चीजें वो कलेक्ट करता है कि हाँ मतलब इट वॉज यूजली हैपेंड if we are sleeping, if we are lying on the bed and we have a very blissful environment and very peaceful environment and we are just enjoying the sound of the rain. So at that time we also do the same. What we will do? क्या करेंगे हम लोग? While sleeping or while lying on the bed, we will think about our daily routine, our imaginative things, different different types of जो बोलते हैं ना ख्याल हमारे माइंड में जो है वो आ सकते हैं. So he says that as he listens to the patter of the rain upon the roof, he has many new dreams in his mind. And main thing, the memories of the past, memories of his mother, uh, come back in the form of dreams. उसकी मम्मा की यादें जो है ना मेन जो उसको सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती हैं वो उसको समझ में आती हैं. Nextly, if we are talking about theme of the poem, Rain on the Roof. So the theme of the poem, the main theme of the poem is the healing power of rain. So this is the main headline. You can underline it. You can highlight it with your marker. That the theme of the poem is healing power of rain. Healing power of rain means अगर suppose हम बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, तो अगर हम उसको बारिश की बूंदों को बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट से लेट कर महसूस कर रहे हैं ना, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर हीलिंग. हमारे जख्म को भरने में हमारी हेल्प करती है. जख्म को भरने में मतलब सबसे पहली बात तो ड्रीम्स. ड्रीम्स मतलब हम निद्रा की तरफ चले जाते हैं और हम जब भी निद्रा की तरफ चले जाते हैं ना तो हमारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी जो डिफिकल्टीज होती है ना कहीं हम उसको भूल जाते हैं. सो द मेन थीम, the lyrical poem Rain on the Roof by Cord Skinney. Actually, it presents the memories crossed in the poet's mind by the showers falling on the tin roof. Through a number of metaphors, the poet shows that the drops of the rain falling on the shingles of the roof sends a train of thoughts running in his mind. उसने बहुत सारे metaphors जो है वो इस poem में use किए हैं. And a train of thoughts running in his mind. बिल्कुल ट्रेन चल रही है विचारों की उसके माइंड में. He is reminded of the way his mother used to bid him. उसको याद आ रही है वो चीजें कैसे उसकी मम्मा जो है वो उसको थपथपाती थी. एंड हिज सिबलिंग्स, उसके भाई बहनों को गुड नाइट विश करती थी एंड पुट देम टू स्लीप, और उनको सोने के लिए कह देती थी. तो उसको वो चीजें जो है वो पास्ट मेमोरीज जो है वो याद आ रही हैं. And the poet directly connect his present with his past through the memories only. अब उसने क्या किया, सिर्फ memories के जरिए अपनी जो thoughts थी उसको imagination को अपने memories में बदल दिया. So actually the theme of the poem is the healing of the power of rain. Healing power, power जो rain होती है उसमें healing power है.
And the musical sound of raindrops falling on the rooftops at the night has the ability to revive sweet memories. बारिश जो है वो एक हीलिंग पावर है और जो उसकी म्यूजिकल साउंड जो क्रिएट होती है ना जब वो आती है तो उसमें जो हमारे को म्यूजिकल साउंड हमें लगती है कि हमारे रूफ टॉप पे हमें महसूस हो रही है that has the power that has the ability to remind sweet memories of the past and rose fences in an otherwise busy mind because all day we do have a very difficult situation we can say that our routine is very hectic we all are moving here and there in our busy mind so when we are completely free and lying on the bed to feel the memories to feel the raindrops hearing so at that time only what happened actually the sweet memories revolved around in our heart and dreams also in our mind also और कुछ जो फेंसेस जो कल्पनाएं हैं ना वो हमारे माइंड में होने लग जाती हैं तो कुछ कल्पनाएं और किसी चीज की नहीं तो जो हमें काम करना है उसको लेकर कि कल हम स्कूल जाएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा तो बिजी माइंड है हम जब काम करते रहते हैं तो हम इन चीजों के बारे में इन ख्यालों के बारे में नहीं सोचते बट जब हम बिल्कुल फ्री होते हैं और हम किसी ब्लिसफुल बोलते हैं ना सुखदायक किसी हम मोमेंट में होते हैं ना then we start doing the fences imaginations so the rain thus soothes and comforts an overworked mind by taking it back to its lovely past. तो जो रेन है ना वो हमें वो सुकून वो कंफर्ट जो है प्रोवाइड करती है जो हम ओवरवर्क्ड माइंड से हम थोड़ी देर के लिए बैक आ जाते हैं अपनी पास्ट की कुछ ब्यूटीफुल कुछ लवली मेमोरीज को याद करते हुए some of our best memories in life are associated with rain क्योंकि बहुत सारी ऐसी यादें भी हमारी लाइफ में होती हैं जो कहीं ना कहीं बारिश से जरूर जरूर जुड़ी हुई होती हैं so when certain events happen long lasting memories come flooding back to our mind तो कई बार कुछ ऐसे इवेंट्स जो हमारे साथ पास्ट में हुए हैं जो बारिश से रिलेटेड हैं अब चाहे वो लॉन्ग लास्टिंग है बहुत पहले के भी होंगे लेकिन वो जैसी बारिश आएगी ना तो वो चीज हमें दोबारा से याद आ जाएगी Here on a rainy day, the poet is listening to the sound made of the roof by the falling raindrops. The pitter patter sound of the raindrops brings back lost memories of his mother and her affection towards him. तो जो उसकी साउंड होती है उससे वो कंप्लीट जो है वो अपने मदर की मेमोरीज की तरफ चला जाता है जहाँ पे उसको यादें आती हैं याद आती हैं अपनी मम्मा की और उनके दिए हुए प्यार की एंड द साउंड ऑफ द रेन अपीयर्स टू द क्रिएट अ ब्लिस टू द पॉइंट द मेन पॉइंट ब्लिस प्रोवाइड करती है उसको ब्लिस होता है सुखदायक मोमेंट नेक्स्ट व्हाई इज पोएट अफेक्टेड बाय द रूफ अब पोएट इतना इफेक्टेड इतना उसको फर्क इतना उसका प्रभाव क्यों पड़ रहा है बारिश का व्हाट इज द मीनिंग व्हाई इज इट सो क्यों हो रहा है ऐसा वो क्यों इतना ज्यादा जो हम कह सकते हैं कि वो फील कर रहा है बारिश की बूंदों को सो एवरी ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग ऑन द रूफ मेक्स अ टिंकलिंग साउंड क्योंकि जो हर एक ड्रॉप है ना बारिश की बूंदों के गिरने की जो हर एक आवाज है दैट मूव्स द पोएट्स हार्ट वो मूव करती है वो क्या करती है पोएट के दिल में चल रही है And as the poet listened to the music made by the rain falling on the roof, अब जैसे पोएट उस म्यूजिक को सुनता है ना जो रूफ पे जो गिर रहा है he visualized in his mind the affectionate love of his mother तो विजुअलाइज करना स्टार्ट कर देता है इमेजिन करना स्टार्ट कर देता है उस अफेक्शनेट लुक को उस प्यार भरी निगाहों को जो उसकी मदर उसको हमेशा दिया करती थी उसको सुलाने के लिए Thus the rain makes a bridge between his present and his past. तो इसलिए ना जो रेन है ना वो उसके लिए एक ब्रिज बन गई जो उसको प्रेजेंट से उसके पास्ट की मेमोरीज की तरफ ले गई सो although all the point is related to that point only why the poet affected by the rain because he feels that the rain makes a bridge between his present and his past memories
I think you will understand my point. Yes. Okay. So what is the point? What is the actual point? That the poet highlights the soothing and healing quality of the nature, and this nature, the voices out the feeling vacant after a rainy day. He memorized moments and memories of long forlorn days, and he dreams of better times when life was not complicated. That was the main point. बिकॉज इट हैपेंस कि हमें लगता है कि जब हम बहुत छोटे थे ना, जब हम अपनी यंग एज में थे, तो हमारी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, बट अब हमारी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं। इसका एक रीजन ये भी है कि पहले उसके पास उसकी मम्मा थी जो उसको ब्लिसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती थी उसको सुलाने के लिए, बट अब उसकी मम्मा उसके पास नहीं है। तो इट मीन्स जो रेन ड्रॉप्स हैं वो उसको उन बेटर टाइम्स को याद करवा रही है जब उसकी लाइफ बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। तो प्रेजेंट की बारिश की बूंदों से अपने पास्ट की कॉम्प्लिकेटेड लाइफ के बारे में सोच रहा है। सो इट मीन्स रेन makes a bridge between his present and his past. So that's why the poet is affected by the rain. I hope you will understand it. Nextly, now we do have the stanzas. So according to these stanzas, I just want to clear one thing only. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, everybody feels thrilled, and one wishes to lie in a cozy bed, and thousands of fancies rush through his mind. And it is most joyful to enjoy listening to the music of the pattering sound of the raindrops on the shingles on the roof. The poet expresses his love for nature and the beauty. So, according to these, I just want to clear only one thing. The very title, with a repetition of the sounds R and N and the long vowels A, I, and O, imitates the rhythmic pitter patter of the rain on a bitter roof. Article the before the word roof makes it a specific roof. The rain on the roof. तो रूफ को उन्होंने एक स्पेसिफिक जो है बताया है, इसलिए रूफ के आगे द आर्टिकल यूज किया गया है। उसने बोला है कि thus the title is very apt as it is suggestive of the childhood memories of the poet has of rain, and the rain has magic-like an effect on him every day, like it falls on his room and lying lazily in his room. He listens to the sheer music of the rain. It triggers a thousand dreamy fancies in his mind. उसने यहाँ पे ट्रिगर किया है मेन कि थाउजेंड ड्रीमी फेंसेस जो है वो उसके माइंड में होती हैं, एंड थाउजेंड ऑफ मेमोरीज कम अलाइव, बहुत सारी यादें जो है वो उसकी लाइफ में जिंदा हो जाती हैं। In particular, the memory of the poet's mother putting her children to sleep at night is indelible in his mind. Every time it's rained, the poet relieves the golden moments of his childhood. Thus, the title of the poem, Can Be Termed, is very appropriate. क्योंकि रेन की बूंदों का उसकी रूफ पर गिरने से ही वो अपने गोल्डन मोमेंट्स ऑफ चाइल्डहुड की तरफ अट्रैक्ट होता है। सो द थीम, द टाइटल ऑफ द पोएम इज वेरी एप्रोप्रिएट, रेन ऑन द रूफ। रूफ के आगे द आर्टिकल यूज इसलिए किया है क्योंकि वो रूफ को एक स्पेसिफिक जो है वो रोल देना चाह रहे थे। एंड उसने बोला है कि विद द रिपीटेशन ऑफ साउंड्स आर और एन की बहुत ही रिपीटेशन हुई है इस फॉर्म में। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। ओके, एनी डाउट? Okay, so now we do have the stanza. When the humid shadows over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the bitter
of the soft rain overhead. Every tinkle on the sinkles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fences into being busy start. And 1,000 recollections weave their air thread into woof as I listen to the patter of the rain on the roof. So, as we already discussed, what is the actual, like we can say that, central idea and what is the actual theme of this poem. Now, after reading the complete stanza, what we come to know, can you tell me something? In the conclusion, rain on the roof. How many literary devices are being used here? Can you tell me? Because in every poem, the poet always express the poem, at least the poem always in the poetic devices. So poetic device used in the poem Rain on the Roof is personification. Alteration is also the poetic device. For example, rain on the roof, the rain or roof, similar, and live listening. So these are some points. So firstly, we can say that this poem is imaginary also. Why is it imaginary? The poem Rain on the Roof by Poetic is rich in visual and sensory imagery. The poet uses vivid descriptions to create a mental picture of the surroundings, such as patter of the rain, soft rain, the light drip of the suspended raindrops. He also described the atmosphere, such as the fragrance of the moistened earth and the coolness of and the calmness of the night. So we can say that the poetry, the literary device of the poem is personification also, and mainly the personification is there. Why? The poet personifies nature by attributing human quality to human things. नेचर को पर्सोनिफाई किया गया है बाय एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन क्वालिटीज को ह्यूमन थिंग्स के साथ कहीं ना कहीं ह्यूमन क्वालिटीज को नॉन ह्यूमन थिंग्स के साथ कनेक्ट करके. For example, he refers to the raindrop as silver arrows that shoot through the leaves and the fingers that tap on the roof. He also personifies the earth, describing it as awake and breathing. Now, according to the stanza, we can say that alliteration is also there because repetition of the consonant sounds like softly singing, steady spears, lie listening. So these are some points. Nextly, onomatopoeia भी है. Onomatopoeia is the use of the words that imitate the sound they describe, like sounds जो हमें sounds के बारे में बताते हैं. So in this stanza we do have patter, drip and tap. So these are the sounds. Metaphor is also there because the comparison between two things without using like and as, like literally to the wavy earth, air threads into the roof. So in conclusion, we can say that rain on the roof implies various literary devices to create a vivid and evocative picture of a rainy night. The poet's use of imaginary personification, alliteration, or onomatopoeia, and metaphor adds depth and richness to the poem, making it a beautiful and memorable piece of literature. So I hope you will completely understand what actually the poet wants to express
according to this poem. I hope you will understand it clearly. At last, I just want to tell only one thing to you about the poem, that the poet is saying that when a humid shadows hover like dark clouds were there in the sky, which are full of the water, the poet is saying that when the sky is full of these clouds, are about to bring rain. When such clouds hover around in the sky, all of the scary spheres, the sky में जो stars हैं वो सब जाते हैं, बादल जिनके अंदर बहुत सारा पानी है वो आ जाते हैं, तो वो हमेशा क्या करते हैं, वो उसके लिए ब्लेसिंग है, और उस ब्लेसिंग को वो सुन रहा है उनके साउंड्स के माध्यम से, दैट मेड बाय रेन ड्रॉप्स, जो रेन ड्रॉप्स ने बनाए. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. So in the first stanza, what is actually given in the complete stanza, we will discuss it later in our next video. So I hope you will understand. Thank you. Have a nice day.